Welcome at Newcastle Training Center. This is your trainer Shahzad Anwar. आज की ट्रेनिंग में आप डेटा प्रिंटिंग ऑप्शंस जो कि एक्सेल 2016 में अवेलेबल हैं, आप उनके बारे में लर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है? और वी आर इनटू द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग राइट नाउ. वेलकम एवरीवन. Okay, let's look at one of our sheets. This is our sales sheet. और इस sales sheet में हम अपना जो डेटा है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, which is a sales data, let's say. So एक नॉर्मल प्रैक्टिस हमने देखा है कि आप सिंपली कंट्रोल B प्रेस करते हैं या फाइल प्रिंट में जाते हैं, and then you can see that there are 16 pages going to be printed, okay? और इनको आप क्विकली नेविगेट करके देख सकते हैं, right? These are all the pages जो कि प्रिंट के ऊपर जा रहे हैं. What if कि हमको selective data को प्रिंट करना है? Not all, we want only the selective data to be printed. और इसको जब हमने प्रिंट किया तो on the next pages, if okay, we have done some setting on this sheet already. Let me take you another sheet. Maybe this one. Okay. So अगर हम इस पर Control P प्रेस करें तो आप देखिए कि नेक्स्ट पेजेस पे जब हम जा रहे हैं एंड टिल दी पेज नंबर 100, यू सी एक तो नंबर ऑफ रो सारे कॉलम्स फिट नहीं हो रहे हैं आपके पेपर के ऊपर, राइट? पेज नंबर 2 के ऊपर और पेज नंबर 300 के ऊपर डिफरेंट कॉलम्स आपके प्रिंट हो रहे हैं एंड यू आर गेटिंग लाइक 110 पेजेस टू बी प्रिंटेड, ठीक है? which gonna be a mess. So अगर आप देखें जब आप कंट्रोल P करते हैं तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये आपके पेज सेपरेटर्स हैं, ओके? whereby what we are looking at कि हमारा ये सारे जो है कॉलम्स एक ही पेज के ऊपर फिट हो जाए. So one approach is कि आप इंटायर शीट को सिलेक्ट करें यहाँ से और अपने कॉलम्स में यहाँ पे डबल क्लिक कर दें ताकि वो ऑटो एडजस्ट हो, ठीक है? ऑटो एडजस्ट करने के बाद आप देखिए कि क्लोजिंग डेट कॉलम का स्पेस हम मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक दैट. और लाइकवाइज रीजन एंड सेल्स टैब, इसको भी हम मज़ीद रिड्यूस कर सकते हैं. वी शुड आल्सो सेट द मार्जिन्स टू नैरो, ओके? नैरो मार्जिन्स में जाइए और ओके, और इसके अलावा आप कस्टम मार्जिन्स में जाके मज़ीद चेक कर सकते हैं कि आप अपने मार्जिन्स मज़ीद नैरो कर रहे हैं. 0.5 top bottom and left right is 0.25, which is fine. Vertically, center on the page, let's say vertically or horizontally, how you want it. Let's say horizontally हम चाह रहे हैं center में, and then we can see the print. Okay. अभी भी ये जो लाइन है आपके प्रिंट की वो बाहर है, इसको हम एक और वे में कर सकते हैं, which is अच्छा पहले तो अभी जो प्रिंट है उसको हम देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिख रहा है. Now it's like this. Still we have 104 pages. और पेज नंबर 2 पे जाइए आप तो जो हमारे कॉलम हेडर्स हैं यहाँ पे वो विजिबल नहीं है. We also have to print the column headers, ठीक है? दो चीज़ें हो गई. और जो हमारा ये जो एक सिंगल कॉलम अपीयर हो रहा है वहाँ पर लास्ट में, उसको भी हमें सॉर्ट आउट करना है. ओके, सो व्हाट वी डू, कंट्रोल P करने से पहले एक काम तो हम ये करें कि हमारा ये जो ये वाली रोज हैं ये टॉप के ऊपर रिपीट होनी चाहिए on all the pages, so we can see the column headings on all the pages. So what we do, we go to print titles, okay, and print area, and then print those to repeat at top. Okay, we select that, those to repeat at top, और ये इन 3 rows को हम top पे repeat करना चाहते हैं on all the pages. Click here again, okay, and then we can set the print area as well, and we say that प्रिंट एरिया हमारा कॉलम टू रिपीट एट द लेफ्ट, अगर हम कॉलम्स को रिपीट करना चाहते हैं इन केस, और हेडर्स एंड फुटर्स को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं मार्जिन्स,
and page. We say we wanna fit to 1 page wide. 1 page is wide by 1 tall. We wanna fit 1 page wide. Okay. और एक हाँ चलिए अभी ज़रा यहाँ पे हम ओके करते हैं और अभी प्रिंट करके देखें कि कैसे दिखता है. You see, oh, it's gonna be 1 page wide. Okay, तो हमको वो वाली सेटिंग इसकी रिमूव करनी होगी. We go back to print titles and we say page. Adjust to हम 100% की बजाय इसको let's say 95% पे try करते हैं. Okay, and then preview. Now looks fine. ना सारे columns fit हो गए हमारे और जो titles हैं you see 3 of the title rows, those are also getting repeated on top. ठीक है. So 100 plus pages से हमने 53 pages के ऊपर हमारा print आ गया and let's go to the last page, let's say 52. Okay, so till the end it looks fine. Okay, now we go to print titles again and here we can set the header and the footer. Okay, custom header में चाहिए and you can have here left section of the custom header. Okay, here we say, let's say it's Newcastle leads data, and then on the right section we want to print maybe the date, time, and before that date. Okay, all right, then we go to footer, custom footer, and here we want to print the we want to say page type भी कर सकते हैं, page number of total page numbers. ठीक है. Okay, and then on the right we can insert here the file name and the sheet name. Okay, and we can insert a picture as well. Let's put the file name with the path. Do we want to really publish the path? No. तो इस ये जो path area है इसको हम remove कर देते हैं, right? Only the file name, and then we want to put here the sheet name as well. The tab name or the sheet name. Okay, looks good. And here we can type something. Okay, in case we want to. Okay, कीजिए तो हमारे headers और footers properly set हो गए, and now we can see how that looks like. So we have got headers, we have got footers. Page 1 of 53, page 2 of 53, right? And the sheet name and everything is showing up, right? Well, so this is one way of printing from the Excel sheet. We have more ways indeed. अगर हम देखें control print में, so we have other options like we can select the way we want to the print the pages. Okay, इसमें 1, 2, 3 और इस तरीके से आप print करेंगे. और यहाँ पे 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 in case you want, you know, आपको multiple copies type, books type बनाना है तो आप इस तरीके से भी उसको print कर सकते हैं. Then we have the orientation, which is pretty simple, you know that, and the page size, किस पेज के ऊपर आप उसको print कर रहे हैं. और in case ऐसे sheets को आप A3 size में print करना चाहें, of course you can select that one. And then we have the custom margins and scaling and print active sheets. Only print the active sheets. यहाँ पे आप think करें, आप entire workbook को भी यहाँ से print कर सकते हैं. Suppose in your sheet you have, in your workbook you have 10 sheets. Okay, और आपको उन सब को एक ही बार में print करना है. So you can print the entire worksheet from there, entire workbook.
or you can print only the active sheets, or you can print only the selection. Print only the selection, or you can print the selected table. Print only the selected table. Okay, print only the selected table. So ये different options हैं आपके पास available कि जिनके basis के ऊपर आप कर सकते हैं, print कर सकते हैं. Now let me show you something more in the printing. Now suppose yeah, maybe हमारे कुछ charts होंगे. Let me just have a look in case. Okay, never mind. चलिए suppose ये हमारा डेटा है जिसमें हम कुछ ये selected areas हैं, हम just इनको print करना चाह रहे हैं. Okay, अगर तो हम कंट्रोल P करें इस शीट को तो आप देखेंगे 87 पेजेस तक ये जा के प्रिंट हो रहे हैं. Okay, and if you select from here, what we need to do, जिस एरिया को हम select करना चाहते हैं यहाँ पर, उसको हम select करना है. Suppose हमको इतना प्रिंट करना है, and click on the print area. Okay, print area, and set the print area. हम इस एरिया को प्रिंट करना चाहते थे. Control P प्रेस करें. Now only that area, one page will be printed. Okay, so this way you are in good control कि आपको hundreds of sheets pages को print नहीं करना. You want only the selected data to be printed. Okay, आप उसको select कीजिए और print area से आप उसको define कर लीजिए. Okay, now suppose we want this much area to be printed. So likewise उसको आप select करें and then print area and then set print area and press Ctrl P. Here we go. That area is now selected, but the orientation need to be changed. So let's do that. Change orientation for let's say. Okay, और अभी भी ये 2 pages के ऊपर जा रहे हैं. So what possibly we can do is fit sheet on one page. Fit sheet on one page. इस पे select कर लीजिए. Now it's all fit on one sheet और आप इसको एक single sheet के ऊपर print कर सकते हैं. ठीक है? Okay. और भी बहुत सारी possibilities हैं. I hope this is gonna help you very much, guys. Thank you for watching. Next week we're going to talk about data, worksheet and workbook security and protection. Particularly जब आप multi-user environment में काम कर रही हैं और आपकी sheets maybe network के ऊपर हैं या आप अपनी sheets दूसरे team members के साथ share कर रहे हैं, how can you have your data protected against any problems whereby many people working on your sheet or maybe yourself. ठीक है, तो interesting topic. Thank you for watching. Do subscribe our channel, guys, and wish you very best luck today. See you next.